Question 285. Calculate the net present value of the proposed investment and comment on your findings. Charm Ansi, a software company, has developed a new game, Pingo, which it plans to launch in the near future. Sales of the new game are expected to be very strong, following a favorable review by a popular PC magazine. Charm Incorporation has been informed that the review will give the game a Best Buy recommendation. Sales volumes and production volumes and selling prices of Pingo over its core life are expected to be as follows. ठीक है तो अभी sales and production selling price दिया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन Pingo का ये सब ठीक है. Advertising to stimulate demand are expected to be 60-50 in the first year of the production and 100 in the second year of production. No advertising or expected in third and fourth year. Incremental cash production overheads. ठीक है. Bingo will be produced on a new production machine costing 8 lakh. Will be produced on a new production machine costing 800. Tax liable debt will be claimed on a reduced balance basis at a rate of 25%. Machine will be useful for 4 years. At the end of no scrap value is expected. आवाज थोड़ा कम करवाना खाली थोड़ा टीवी में थोड़ा सा ज्यादा नहीं. 285. हाँ परफेक्ट परफेक्ट 285 ये वाला स्टार्ट करते हैं. तो ये तो एक tax is settled in the year in which they arise. ठीक है परफेक्ट. go $20,000. तो कंट्रोल एक्चुअली ईयर में डालूंगा. Then selling price is 25, 24, 23, 22.
then advertising cost, then cost, then net operating cash percent cost जाएंगे, फिर उपचार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रोल एक्स ये किया, then टैक्स पे करेंगे, नेट ऑपरेटिंग कैश ऑपरेटिंग कैश प्लस टैक्स अलाउेबल depreciation counting present values मिलेंगे PV sum of this entire thing, this into this, the present value, इसको हम बाद में देखते हैं, इसलिए this minus tax plus tax allowable debt using this, operating cash flows is this plus investment for value plus नहीं plus even minus advertising cost 0.3% का टैक्स है, तो ये रहा। अभी तो पहले छोटा करके ना अगर वेरिएबल कॉस्ट के लिए सॉल्व करते हैं, तो भी और अभी को ऐसे रख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट सेकेंड, कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट। चलो और अभी यूनिट्स प्राइस सब पे डाल देंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फिंगो प्रोडक्शन ऐसा, तो डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी था। हम्म, काम कर लेते हैं, अभी इसको भी निकाल देता हूँ मैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ना, कंट्रोल वी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दिस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट gives you this value। ठीक है, भी वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले यूनिट्स डाल देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के इट इज 6 पर यूनिट, इस 6 को पूरी जगह पे खींचेंगे, ये हो गया 6। फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 पर यूनिट एंड दैट इज 5 पर 5.4 पर यूनिट। ठीक है, तो ये 4 को पूरे खींचेंगे ऐसे, फिर आ गया इधर 5.4, 5.4 को खींचेंगे ऐसे, ये भी हो गया। चलो देन अभी टैक्स अलाउएबल डेट निकालना है, उससे पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट इज थिंग 8 लाख उसने बोला भी था, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट उन्होंने बोला है
Advertising costs to stimulate demand are expected to be 6,50,000 in the first year of production, एंड उसके नेक्स्ट ईयर में 1 लाख, और उसके बाद कुछ भी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया एक्चुअली विजुअल का। ये सब हो गया, 1,50,000, 70, 60, 60 बराबर डाला ना, हाँ। 25, 24, 20, ठीक है। अभी टैक्स अलाउेबल डेप्ट ढूंढना है खाली। अलाउेबल डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डिस्काउंटिंग डाल ही देता हूँ। टैक्स आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट इज 10%, तो वो डाल ही देते हैं इसे। 0.901, 909, सॉरी, 826.751.683.62, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक टैक्स अलाइबल डेप्ट निकालना बाकी है, लेकिन तो करने के बाद ही मूव फॉरवर्ड। टैक्स अलाइबल डेप्ट के लिए सबसे पहले और इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट मटेरियल का क्या है? वो सेम ही है, वैसा ही है, हर एक चीज को तो खाली यूनिट से मल्टीप्लाई करके डालना है। नहीं नहीं, डायरेक्ट मटेरियल का आया मेरे को, तो वो कहाँ पे डालना अपने को? किधर पर्टिकुलर भी क्या? डाल दे, किधर भी डाल दे, किसी भी कॉस्ट के ऐसे हेड के नीचे डाल दे, वो हो जाएगा। तूने किसमें डाला है? मैंने उसका नया कॉलम बनाया रे, उसका वही करना है, किसी के भी तो नीचे डाल सकता है उसको, ऐसा फर्क नहीं पड़ता उससे। चलता है ना उसको। तो टैक्स अलाइबल डेप्रिसिएशन विल बी क्लेम एट 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। मशीन विल बी यूजफुल फॉर 4 years, एट द एंड ऑफ इट देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल। रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे है, इन्वेस्टमेंट इज 8 लाख, ठीक है। डेप्थ इज 0.25 माइनस दिस, ये जो 0.3 करेंगे उसका हमें आएगा ये ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर के एंड में कोई स्क्रैप प्रॉब्लम नहीं है, तो हम्म, स्क्रैप वैल्यू तो जीरो, लेकिन अपन सेल नहीं कर रहे ना मशीन को। वी नॉट सेलिंग दैट मशीन, वी आर, it just does not have a scrap value, इसका वैल्यू जीरो है। अगर कुछ होता तो शायद हम कर सकते थे, बट अगर स्क्रैप वैल्यू जीरो है तो मुझे लगता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना है, मतलब 25% निकालना ही है, या इसका 0.3 निकालना है क्या। जी मुझे वो चेक करना पड़ेगा, लास्ट का फिगर चेक करना पड़ेगा भले। ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, बट अपन डिस्पोज ऑफ कहाँ करें, जिस डिड नॉट हैव अ स्क्रैप वैल्यू। जब मम्मी मांग रहा है, बोल रहा है, का 0.3 ले लेता हूँ, ठीक है चलो। लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस। तो इन थाउजेंड अगर करने जाएंगे तो आंसर इज 608.19।
I hope answer is pretty much the same, pretty much similar. 285, 61.3 आ रहा है हमारा आंसर आया 608. ओके वेट 100% कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे. 9 लाख वेरिएबल ये बराबर है वेट का भी बराबर है. एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख. कॉस्ट इज 6 लाख फॉर. ये कहाँ बोला फिक्स कॉस्ट इज 4. हाँ मैंने कहा 4 into units per game. Fixed cost represent incremental cash fixed production overheads. तूने फिक्स कॉस्ट का क्या किया? फिक्स कॉस्ट मैंने लेस किया ना, कंट्रीब्यूशन। हाँ बट कितना है तेरे को फिक्स कॉस्ट हर साल? 6 लाख, 2 लाख 80, 2 लाख 40,000, 2 लाख 40। वो नहीं करना है. इन्होंने बोला फिक्स्ड कॉस्ट इन ईयर वन 1,50,000 into 4 which is 6 lakh and since this represents a one-off increase in fixed production overheads these are fixed costs in subsequent years as well. ओ ए, हाँ रे, फिक्स कॉस्ट है, हर साल चेंज थोड़ी बट होगा। यार ये ये बराबर है ना, अपना वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है हर साल पर, बट फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा। ऐसा नहीं होता रे. बहुत सारे समय फिक्स कॉस्ट भी चेंज होता है. इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है अलग अलग रीजन की वजह से चेंज हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा. मतलब तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं ना, अगर इन्फ्लेशन से चेंज होगा वो बोल रहा है किसी तू। भी रीजन की वजह से फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकता है ऐसा नहीं है. बट इन्होंने नीचे एक चीज बोली थी इंक्रीमेंटल. वो क्या थी मेरे को वो समझना है. फिक्स्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट इंक्रीमेंटल कैश फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. लिखने को तो चल ठीक है 6 लाख है तो 6 लाख लिख देंगे ऐसा दूसरा दिक्कत नहीं है. देन सिक्सटी तो वन इसको पॉइंट सेवन रिप्रेजेंट नाइन एट इंक्रीमेंटल टू आ क्या है? जाएगा जो इनको भी आया है ऑलमोस्ट सेम. टैक्स अलाउेबल है राइट है. टैक्स अलाउेबल है टैक्स तो टैक्स हो गया. 60 45 34 एंड 101 ठीक है वो बराबर है मतलब ये वाला कॉल सही था अपना. एग्री करने का डिस्काउंटिंग भी सही से किया है. बस वो कैश फिक्स्ड कॉस्ट का ही है. उन्होंने बोला है वहाँ पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है तो इसीलिए वहाँ पे 6 लाख लेना है पर ईयर. अच्छा, तेरा एक्सेल दिखा एक मिनट। देख लो. ये तूने टैक्स अलाउड डेप्रिसिएशन कैसे किया? वही तेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है उसके ऊपर तेरे को तेरा टैक्स बेनिफिट चार्ज करना है बस उतना ही है. एक मिनट, और वापस बता। हाँ रुक जा बताता हूँ. कुछ नहीं तेरे को खाली अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसके उसके ऊपर तेरे को हर हर तरह टैक्स बेनिफिट देना है उस इंसान को. अच्छा अच्छा, ये वाला, अरे मैं ये भूल गया। कोई ना. बस यार एक का क्वेश्चन रहेगा एंड तक तो ठीक है. चलो. फिक्स कॉस्ट. और ये मशीन कितने साल के लिए थी? 4 साल के लिए ना, तो मतलब हर हाँ साल हाँ. 2-2 लाख रुपए रहेगा। Fixed costs represent incremental cash fixed over production overheads.
Hmm, yeah, that will still be a doubt. बाकी सब तो परफेक्ट है. कमेंट भी करना है ना फाइंडिंग्स पे. So net present value of the person comment on your findings. The net present value of the production is 61 जो भी अपने को आया है. That seems that the advertising cost it seems that the advertising cost that was being incurred has not been working that effectively क्योंकि उतना ज़्यादा सेल्स बढ़ नहीं रहा है compared to year 1 and 2. बस और क्या. अपन ये भी लिख सकते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, लाइक इनिशियल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो आगे नीड नहीं है, या फिर उतना नीड नहीं है, एग्रेसिव नीड नहीं है। कमेंट ही उन्होंने क्या किया. The net present value of 61,300 is positive and the investment can therefore be recommended on financial grounds. However, it should be noted that the positive net present value depends heavily on sales in the first year. In fact, sensitive analysis shows that decrease of 5% in the first year sales will increase in a zero net present value. A sensitive analysis shows that the increase of 5% in the first year of sales will result in zero net present value. ठीक है, उन्होंने नेट प्रेजेंट ये सेंसिटिव मार्जिन भी उन्होंने कैलकुलेट किया है. तो ठीक है. लास्ट में theory question. Discuss the reasons why net present value investment मार्क्स। method appraisal method is preferred or to other investment appraisal methods such as payback, return on capital employed, and internal rate of return. In payback period, we only consider the amount of the period in which we will get our initial investment back. Whereas net present value considers the entire life of the project. The return on capital employed is simple to calculate. However, it gives us the answer in percentage, whereas a net present value gives us an absolute figure. It is more attractive to the shareholders and that's what they really require. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज है तो दो आईआरआर मिलते हैं वगैरह वगैरह. देन मतलब आईआरआर को और एक्सप्लेन कर सकते हैं डीपली। हाँ, आईआरआर इज वेरी जैसे अपन बैंक, इज टीडियस टू कैलकुलेट वगैरह वगैरह. पर पढ़ लेते एक हैं. चीज, बोल बोल बोल. हाँ वही रे, दो एनपीवी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। There are many reasons that could be discussed in support of the view that net present value is superior to other investment appraisal methods. NPV considers cash flows rather than profits, right? This is the reason why NPVs prefer to return on capital employed ROC since ROC compares average annual accounting profits with initial or average capital invested. Financial management always prefers cash flows to accounting profits since profit is seen as being open to manipulation. Furthermore, only cash flows are capable of adding to wealth of shareholders in the form of increased dividends. Both internal rate of return and payback period also considers cash flows. In NPV considers the whole of investment project. In this respect, NPV is superior to payback, which measures the time it takes for an investment project to repay the initial capital invested. Payback therefore considers cash flow within the payback period. It ignores the cash flows outside of the payback period. If payback is used as an investment appraisal method, projects yielding high returns outside of the payback period will be wrongly rejected in practice. However, it is unlikely that payback will be used alone as an investment appraisal method. हाँ, पेबैक के साथ तेरे को एक और कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ता है चाहे आरओसी कुछ भी हो. एनपीवी considers time value of money. NPV and IRR are both discounted cash flows DCF models that consider the time value of money, whereas ROC and payback do not. Although discounted payback can be used to appraise investment projects, this method still suffers from criticism that it ignores cash flows outside of payback period. Considering the time value of the money, Considering the time value of the money, it is essential since otherwise cash flows occurring at different times cannot be distinguished from each other in terms of value from the perspective of the present time. NPV is an absolute measure of return. NPV is seen as being
superior to investment appraisal methods that offer a relatively measure of return, that is percentage basically, IR और ROC percentage देते हैं, ये बंदा absolute measure देता है, and therefore एब्सोल्यूट fail मेजर। to reflect the amount of initial investment or the absolute increase in corporate value. Defenders of IRR and ROC respond that these methods offer measure of return that are understandable by managers and which can be intuitively compared with economic variables such as interest rate and inflation. एक बार पढ़ लेते हैं. NPV links directly to the objective of maximizing shareholder wealth. NPV of an investment project represents the change in the total market value that will occur if the investment project is accepted. The increase in wealth of each shareholder can therefore be measured by the increase in the value of their shareholding as a percentage of overall issued share capital of the company. Increase in the wealth of each shareholder will therefore be measured by the increase in the value of their shareholding as a percentage of overall issued share capital of the company. Okay, ठीक है. Other investment appraisal methods do not have this direct link with the primary financial management objective of the company. ठीक है. NPV offers the correct investment advice. With respect to mutually exclusive projects, NPV always indicates the which project should be selected in order to achieve the maximum increase in corporate value. This, this is not true of IRR, which offers incorrect advice at discount rates that are less than the internal rate of return of the incremental cash flow. This problem can be overcome by using the incremental yield approach. यह समझा नहीं, लेकिन इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि anyway NPV offers correct investment advice in terms of if NPV is negative or higher than other projects. अगर एक का 69 है, दूसरे का 71 है, तो 71 वाला अपन एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा. हाँ मतलब हायर है। तो ये सिंपल वे में बोलने का ये तरीका. NPV can accommodate changes in the discount rate. While NPV can easily accommodate changes in the discount rate, IRR simply ignores them since the calculated internal rate of return is independent of the cost of capital in all time periods. Simply ignores them since the calculated IRR is independent of the cost of capital in all time periods. Okay. एक ये तो बात समझ जाएगी, इजीली अकोमोडेट चेंजेस, क्योंकि तू 10% ले ले, 9% ले ले, 12% ले ले, ऐसा मतलब वो आराम से तू चेंज कर सकता है अगर तेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल गया तो. आईआरआर सिंपली इग्नोर्स देम, मतलब ठीक है वो डिस्काउंट रेट को उतना कंसिडर नहीं करता फॉर ईच ऑफ द ईयर्स सिंस द कैलकुलेटेड आईआरआर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ऑल टाइम पीरियड्स. ओके. मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर ये जो 0.909 है, ये हर साल 0.909 ही कंसिडर करके चलता है, ऐसा. कौन सा कौन सा? आईआरआर हर साल एक ही डिस्काउंट फैक्टर फॉर एवरी ईयर कंसिडर करके चलता है. देखना, आईआरआर सिंपली इग्नोर्स देम, डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करना, आईआरआर सिंपली इग्नोर्स देम सिंस द कैलकुलेटेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is independent of the cost of capital in all time बट periods. जो भी अपन ने कैलकुलेट किया वो आ रहा तो था, जो ये वाला। अपन ने एनपीवी क्या कैलकुलेट किया ना, ये अपन एन ने एनपीवी के अरे थ्रू अपन सॉरी ने सॉरी आईआरआर एनपीवी था। कैलकुलेट किया. एनपीवी कंसिडर करता है, आईआरआर इग्नोर करता है। हम्म. और ये भी पॉइंट सही है कि अगर आईआरआर के अंदर एनपीवी आ रहा है, पर बाहर आई थिंक उसका वो हायर माइनस लोअर अपन कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो शायद सेट ऑफ हो रहा है वो वाला सेट ऑफ एडजस्टमेंट. हो रहा है। NPV can has a sensible reinvestment assumption. हाँ, ये तो सही है. NPV assumes that intermediate cash flows are reinvested in the company's cost of capital, which is reasonable assumption as the company's cost of capital represents the average opportunity cost of the company's providers of finance. That is, it represents the a rate of return that exists in the real world. By contrast, IRR assumes that intermediate cash flows are reinvested in the internal rate of return, which is not an investment rate available in practice. Basically, IRR assume करता है कि बराबर। पूरा का पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट ही हो रहा है, whereas एनपीवी अज्यूम करता है कि खाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जितना परसेंट है उतना ही परसेंटेज री इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसा. री इन्वेस्ट हो रहा है। ये मैंने ये पढ़ा था कहीं पर, इसलिए. NPV can accommodate non-conventional cash flows. Perfect. Non-conventional cash flows exist with negative cash flows arise during the life of the project.
For each change in sign, there is a potential one additional internal rate of return. With non-conventional cash flows, therefore, IRR can suffer from technical problem of giving multiple internal rate of return. ये पॉइंट के लिए मैं बस वेट ही कर रहा था, ये सही है। तो ये 8 9 पॉइंट्स हो गए, 9 मार्क्स के पॉइंट लिए। है। यार 9 मार्क्स के लिए आया ये थ्योरी यार। मेरे को तो पाँच आ रहे प्रैक्टिकल थे, मतलब। 5 मैक्स आ रहे थे, 5 या 6। हाँ, 5 इस ऊपर के बॉन्ड, बाकी का और भी था रे, वो एडवाइस देना, फिर मल्टीपल मल्टीपल रेट्स हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, शेयर होल्डर का। अच्छा, एक मिनट, तेरा एक्सेल खोल बस दिखा दे, मुझे ऊपर से एक बार वो देखनी है। एक हाँ, मिनट, मैं ये ये रिकॉर्डिंग सब बंद कर तेरा। देता हूँ, फिर देख लेता हूँ मैं। हम्म।